Myself, Sankalp Gupta. I am the head of Department of Social Studies in Education World. Social studies is a very important subject and it covers a wide range of subjects under the ambit of it. Most of the subjects which we cover under social studies are history, polity, as we know that polity is called civics in ICSC board and it is under the social studies in CBSC board, and geography, environment, and economics. So it is a vast subject and it is one of the most important subject for the overall development of a student. In today's world, it is very important to achieve a great knowledge about the social studies regarding historical events, regarding the political events, regarding how the economy of our country is working, how the environment is changing right now because these days environment is a major concern. There are many summits which are happening in the country just to save the environment. So it is very important to have a holistic approach towards this subject and we should be concerned about each and every aspect which we will be studying in the social studies. There are many subjects in education world under the social studies which will be covered by our expert faculties like geography and polity will be covered by Miss Navedita. She is an expert faculty of this. I will be personally covering the topic of history, which is very important for understanding the future events to be predicted in our life. So, first we will start with the importance of history कि हिस्ट्री की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम और आगे जाके इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा. So, studying history enables us to develop the better understanding of the world in which we live. Building knowledge and understanding the historical events and trends, especially over the past, enables us to develop a much greater participation for current events today. History can guide learners to see the trends and processes in a broader, holistic perspective and to understand them. Through history, they come in contact with the other cultures and societies, and in this way, they gain a more holistic understanding of the contemporary world and their place in the broader context. So, इन दो पैराग्राफ्स का एक सिंपल सा मीनिंग है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा. जो पहला बेनिफिट है हिस्ट्री का वो क्या है? एक तो हम डिफरेंट cultures and societies we come across different cultures and societies. This is one of the most important part of the history. Like for example, in our whole lectures, we will be studying Paleolithic, Mesolithic, Chalcolithic. What are these? Don't need to worry. We will cover each and everything in a very holistic way. So, be it the Paleolithic culture, Chalcolithic culture, Bronze Age culture, for example, like in sixth class students, they have learned about the chapter Harappan civilization. Mostly the age is 1750 to 200 BC. So this is one of the very important culture, Harappan civilization. It flourished on the banks of river Indus and therefore it was called Indus Valley civilization. The advent of bronze came in this period. The another name, it is also called Bronze Age civilization. So this civilization is very important for us to discuss and it comes in the part of the ancient history. As we know that ancient history, medieval history and modern history, these are the basic three elements of the history and all the three are interconnected. If you are knowing the events of the ancient history, then only you can proceed towards medieval. If you know the medieval, you can proceed towards the modern. The most important part of the history is the modern history.
in which the British come to India, and in 1600 AD they come as a trading company, and later on they just possess whole of the country and gets converted from trade to territory. In the further slides we will discuss about how this change took place, and slowly by slowly we will cover each and every aspect. So now, if I talk about the syllabus, okay, we will just take one example. If we talk about class 8, we will talk about both. Don't need to worry, because Education World is covering both the boards, CBSE as well as ICSE. We know the expertise about both the boards. We have the faculty who have taught in both the boards, so no need to worry in the future classes. First of all, we will talk about the CBSE. Okay, CBSE has the basic books which are very beautifully designed, very well structured. Those are called NCRTs. I think most of the students will be knowing about NCRTs. They are the most common books which I think more than 70% of the students have studied. So now, if we talk about class 8th NCRT of history, इसका नाम है R past 3. In the picture you are saying this is the part 1, but now ये compile हो चुकी है और दोनों parts एक single part में आते हैं. इसके अंदर हम जो चैप्टर शुरू करते हैं, ये शुरू किए जाते हैं आपके हाउ, व्हेन एंड वेयर. लाइक इसके अंदर डेट्स की रेलेवेंस बताई जाती है. उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक है 8th क्लास की, मोस्टली डील्स विद मॉडर्न हिस्ट्री. आई जस्ट टेल यू, this is the modern history. Basically, how the Britishers came and started their rule in India from trade to territory. Because if I just tell you 1600 AD में जब अंग्रेज हमारे भारत में आते हैं तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी के फॉर्म में आते हैं, और उनको आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ, सबने नाम सुना होगा. ये चार्टर प्रोवाइड करती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी. सो ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं किस फॉर्म में? ईस्ट इंडिया कंपनी में, EIC. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. आई थिंक आपकी हिस्ट्री का पहला सेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने वाला, बिकॉज आज की जो पीपीटीज हैं उसके अंदर आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपकी हिस्ट्री की जर्नी कंप्लीट होने वाली है आगे. सो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, पहले ये ट्रेड करने आती है. धीरे 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 ये पूरे इंडिया के ऊपर अपना दबदबा बनाने लग जाती है. और हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? इट इज द बंगाल, जहां से ये पूरे इंडिया में अपना दबदबा बना देते हैं. बंगाल में सबसे पहले आपकी जो स्टार्ट होती है, एज यू नो दैट माइट बी नोइंग और नॉट, जैसे बैटल ऑफ प्लासी. (1757). Later there comes Battle of Buxar. It occurs in 1764. So these are the two events जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये दोनों बैटल्स को जीतते हैं और पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं. इन बैटल्स को डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे जैसे जैसे हम लेक्चर्स को अंदर से पढ़ेंगे. अभी राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन अबाउट अ टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो इसके बाद हमने क्या करना है, आईसीएसई की बुक खोल के देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं.
So now this is the ICSA book. If you just can see, History and Civics. The name of the book is History and Civics, where the history is polity. History we have talked about, and civics is called the polity. Okay, so in this also, if we see the chapters: traders to rulers, advent of East India Company, conquest of Bengal, battle of Plassey and Buxar, great uprising of 1857. So, in both the classes, 8th class, both the boards, CBSE and ICSE, there is one topic which is coming as a common topic. If we talk about this, that is the Great Uprising of 1857. And this is the topic which we are going to discuss. And students, believe me, this is a very wonderful topic and you will enjoy. So now we are going to discuss about the Great Uprising of 1857, or the Revolt of 1857, which is also called the Sepoy Mutiny, which was one of the most famous mutinies, and you have also seen the picture related to this. The name of the picture is Mangal Pandey. So now we are going to proceed further. Just wait a minute. Okay. So this is called the Revolt of 1857 Sepoy Mutiny. Okay. Mangal Pandey. As you see two pictures here. This one is the real picture. The man who knew no fear. This was the Mangal Pandey. Because he was a person who just shot dead a general of British when he was forced to use the greased cartridges, which was one of the immediate cause of the revolt of 1857. He belonged to the 13th 4 Bengal Native Infantry, and he was one of the major cause due to which the mutiny spread to the whole of the country. The revolt of 1857, if we talk about, first of all, we should know why did the revolt took place. So this revolt was not due to a single event. It was the result of the culmination of the major events which were taking place in the history, which gathered and just formed a form of revolt of 1857, or the Sepoy Mutiny. Why it is called Sepoy Mutiny? This is very important to discuss, because it was initiated by sepoys. Sepoy means Sipahi in Hindi. Okay, so now if we go beyond this, we should know first of all what was the cause due to which the revolt took place. So now we are going to shift towards the causes. Just wait a minute. Okay, so here we come to the causes of the revolt. So there is not a single cause. If we talk about the cause of the revolt, there are many causes. First of all, if we talk about political causes, social causes, religious causes, economic causes, administrative causes, and military causes. I know you all are just going this for the first time, but frankly speaking, this is very easy topic to be discussed. I will not cover the whole topic today, but I will just give you the glimpse of one or two events which were the main reasons behind the revolt. The main reason behind the revolt was the political cause. And in the political cause, one was the doctrine of lapse. This was one of the policy which was invented by Lord Dalhousie, who was the then viceroy of the time. He was the viceroy of that time. So if we talk about the political cause, in that if we talk about doctrine of lapse, we will come further the various causes, also religious and economic causes. But in this slide, in this lecture, I am just going to discuss two causes: political cause, under which there came the doctrine of lapse, and one is the military cause. Under this, we will study about the issue of greased cartridges. And this was the immediate cause of the revolt. Okay,
So in this slide, rest the religious and economic and administrative causes. As we go beyond the lectures, the classes will begin. We will go for each and every cause in a very holistic way, and you don't need to worry. All the notes will be provided. I will make the history a very good subject and an easy subject for you. Just wait a minute for the next slide. Okay, so here comes the doctrine of lapse. So as you see, this person, this was Lord Dalhousie. He was a very shrewd person in reality, and he was also a very clever person. If we talked about the doctrine of lapse, he was the brainchild of the doctrine of lapse. Lord Dalhousie, the Governor General from 1848 to 1856, devised the doctrine. It stated that a kingdom could be annexed if the king died without a male heir. सो आपको इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा. क्या होता था कि कोई भी अगर सपोज करो किंगडम था, अगर तो वहां का जो राजा है उसका मेल सन होगा तो वो किंगडम चला सकता है. अगर वो राजा का कोई भी मेल सन नहीं होगा तो वो जो किंगडम होगा वो कोलैप्स हो जाएगा. इफ नॉट देयर, अगर हम बात करें कि अगर किसी राजा के अडॉप्टेड सन हो तो भी वो जो होगा आपका किंगडम होगा कोलैप्स हो जाएगा, अनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिशर से. सो जब ये पॉलिसी आती है तो बहुत सारे राजा होते हैं जिनका रियल सन नहीं होता है और सबके पास अडॉप्टेड सन थे. जब उनको पता लगा कि ये पॉलिसी आ गई है तो उनको बहुत ही दिक्कत आती है. दे जस्ट गेट पैनिक एंड दे ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ रिवोल्ट. इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सबसे पहले जो स्टेट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बुक्स, मोस्टली इट इज आस्क्ड इन द बुक्स. It is the first kingdom was annexed was Satara, the next was Sambalpur, Udaipur, Nagpur, and most important one is the Jhansi. As you know, Jhansi Rani Lakshmi Bai. खूब लड़ी मर्दानी जिसके बारे में हम सुनते हैं, रानी लक्ष्मीबाई. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण उनकी भी टेरिटरी एनेक्स कर ली गई थी बिकॉज उनका रियल सन नहीं था, जिसके कारण वो बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं. और आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वेलिएंट तरीके से लड़ती हैं और बहुत ही अच्छे से सामना करती हैं. ऑल दो लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से सामना किया था ब्रिटिशर्स का, और वो एग्जाम्पल देती हैं एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ. बिकॉज राइट नाउ उनको देख के, उनकी एग्जाम्पल से कई ऐसे वुमेन हैं जो इंस्पायर होती हैं. सो इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज ऐसी स्टोरीज आपको इंस्पायर करती हैं फ्यूचर में कुछ करने के लिए. सो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आपको पता होंगे तो फ्यूचर के इवेंट्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, फ्यूचर में अपनी लाइफ को सही कर सकते हो. सो दिस वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स which you are going to study in the further lectures also. Now I am going to discuss about the immediate cause of revolt of 1857. Okay. So if we talk about the immediate cause, so immediate cause is like something which creates the spark. Okay. आप बहुत पास्ट में कुछ ना कुछ सहते आ रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ होता रह रहा है आपकी लाइफ में. देयर आर मेनी इवेंट्स व्हिच आर अकरिंग इन योर लाइफ व्हिच आर अफेक्टिंग यू, एंड सडनली वन इवेंट कम्स इनटू योर लाइफ लाइक यू आर नॉट एबल टू रेजिस्ट एनी मोर. ओके, हिंदी में कह ले तो पानी पूरा ऊपर तक भर चुका है, इसके बाद आप सहन नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो? विद्रोह. यू जस्ट गो फॉर द रिवोल्ट. So what was the immediate cause? If you talk about immediate cause was when the introduction of Enfield rifle came. Introduction of Enfield rifles. इसमें सारा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा क्या होता क्या था. See this students, this one is the greased cartridges. Okay, here you can see grease. This one is the bullet
द पाउडर एंड द पेपर केस। अब क्या होता था कि ये जो पाउडर को निकाल कर इस राइफल में डालना होता था, तो अब इसको कैसे पुल ऑन करना है? अपने माउथ के साथ। So with the mouth they had to plug this grease out, and the problem with this grease was it contained it was made up of beef and the pig fat, and it was to be bitten off before loading, served as a spark of the revolt. यही प्रॉब्लम थी जो जिसने एक स्पार्क क्रिएट किया। बहुत गुस्सा आ गया सिपाहीज में, बिकॉज मोस्टली जो सिपाहीज हिंदूज और मुस्लिम्स थे उस टाइम, उन दोनों के लिए प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो ये जो पोजीशन आती है, यहाँ से पाउडर गन में डलता था, फिर उसको ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। So, introduction of Enfield rifle, whose cartridge is made of beef and pig fat to be bitten off before loading, served as the spark of the revolt. Revolt began on the Meerut on 10th May 1857 as the mutiny in Indian soldiers. It became the epicenter of the revolt. So, this is the one more question, which was the epicenter of revolt? इट वॉज मेरठ। और कब शुरू होता है यहाँ पे? 10th मई 1857। जब ये रिवोल्ट शुरू होती है तो इसके बाद नेक्स्ट, वैसे हम आपको अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको मैं इसके बाद बताता हूँ ये कि ये कैसे स्प्रेड होती है। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब ये रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट होती है, मेरठ में मोस्टली जो सोल्जर होते हैं वो कौन से होते हैं? 19th इन्फेंट्री के। और ये जब रिवोल्ट जो होती है 1857 की स्प्रेड होती है, तो ये सबसे पहले जो सिपाहीज होते हैं, मोस्टली जितने जमींदार, पीजेंट्स, आर्टिसंस जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के थे, सबको बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही थी ब्रिटिशर से। उन सबको इकट्ठा करके ये जाते हैं बहादुर शाह जफर के पास, जो कौन थे उस टाइम हमारे लास्ट मुगल एम्परर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सब लोग इनके पास क्यों जाते हैं? उसका आंसर ये है कि उस टाइम इंडिया में क्या हो रहा था कि एक यूनिफाइड लीडर नहीं था जो इस रिवोल्ट को आगे बढ़ा सके। और मुगल्स की हिस्ट्री क्या थी? ये एक ऐसा था एम्पायर जिसने एक सेंटर से पूरे इंडिया पे राज किया। This was the only centralized empire till now which existed in India. Therefore, इनकी एक रेपुटेशन थी, इनको सब रिकॉग्नाइज करते थे, इसीलिए बहादुर शाह जफर को लीडर चुनने का सोचा गया। और उसके बाद एक आती है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, जहां पे म्यूटनी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है और यहां से आपकी रिवोल्ट स्टार्ट होती है। So students, this is the immediate cause of, just one second, this was the immediate cause of revolt of 1857. Now we have completed this, so we are going to see what the things I want to tell you, some things about this. Okay, so now what education world will provide you? Okay, now I have talked about the history. I am going to deal with the history, and frankly speaking, all the aspects will be covered. Now, the course will be covered according to the updated syllabus. There are many changes in the CBSE pattern. Some chapters have been deleted, some chapters have been added. All those things will be provided you in a very prospective way. All the notes will be provided to students on the portal. The portal is going to be launched on 23rd of July.
Regular assignments will be provided to test your knowledge. Live streaming and recorded lectures will be provided to you on the portal, and doubt clearing session will be there on the regular basis. So these are the things which Education World will provide you on the regular basis, and frankly speaking, the things will be very easy. I just want to discuss one thing with you students. Cramming is a very bad habit, and on the Education World हम आपको रट्टा नहीं लगवाने वाले, आपको एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझाएंगे। बिकॉज ये जो भी स्टडीज हम करेंगे 6 से लेके 10th की, ये क्रैमिंग करते रहेंगे तो आगे जाके हमें इसका कोई फायदा नहीं है। +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे एस्पायर करते हैं सिविल सर्विसेज में, एस्पिरेंट्स में, IPS IAS बनना चाहते हैं, उनका सिलेबस क्या है अभी खोल के तो देखो आप। 6 से लेके 12th क्लास की NCERT की बुक्स हैं। सो इफ यू प्रॉपरली डू दी सब्जेक्ट्स राइट नाउ, अगर इनको ही अच्छे से आप होलिस्टिक वे में पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, इनसाइड रीडिंग करोगे किसी चैप्टर की, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और कल को आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ICSE स्टूडेंट्स की बात करूं, उनकी जो बुक्स हैं वो तो प्रॉपर इस वे में पैटर्नाइज की हुई हैं जैसे प्रॉपर ये UPSC ओरिएंटेड बुक्स होती हैं। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आपको अपना वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ स्टडिंग चेंज करना होगा, एंड एजुकेशन वर्ल्ड विल हेल्प यू डूइंग दैट। आई एम रियली ग्रेटफुल टू टीच यू स्टूडेंट्स and hope so you have a nice day. It was great teaching you today, and I will come with a new lecture on history as soon as possible. Thank you. This is Sankalp Gupta from Education World.